Okay, see, this radiant energy crosses through this atmosphere. Some amount of energy is absorbed and dissipates by this atmosphere, reach to the Earth's surface. Now what I have said that if the Earth continuously trapped the heat, won't return back, then the temperature of the Earth increases and the conditions become very harsh. But since long, what we observe that the temperature and the heat of the Earth is constant. The reason is why. The question is why? Why the temperature or the heat of this planet Earth is constant? Because the amount of insolation received by the planet Earth is equal to the amount of terrestrial radiation. What do you mean by terrestrial radiation? Radiation by the Earth. अर्थ भी रेडिएट बैक करता है. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप इफ यू टेक अ पैन एंड पुट दिस पैन ऑन ए स्टोव and if you lit the stove, this pan started absorbing the heat. When you off this stove, okay, then what happened? This pan now act as a black body because this pan already trapped the heat, and later when the source of heat is now close, what happened? This pan started radiating back the heat and cools down. Like that, the Earth also radiate back the heat. That heat is known as terrestrial radiation. So what I have written here, why the balancing is probably due to incoming solar radiation, that is insolation, is equal to the terrestrial radiation. That's why the temperature of the Earth and the heat of the Earth is remain constant for a longer period of time, and this is known as heat budget. Now how it possible, and in what form the terrestrial radiation return back to the space? अंतरिक्ष में वापस कैसे चला जाता है, यही देखने वाले हैं heat budget में. Okay, so now let's understand this. Let's assume first that the amount of insolation which is received by the planet Earth, okay, is 100 units. Okay, तुम ये मान लो कि जो amount of insolation आ रहा है अर्थ सरफेस पर वो 100 यूनिट है. अगर ये 100 यूनिट जो इंसोलेशन आ रहा है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में 100 यूनिट अगर वापस चला जाए तो हम इसे बजट कहेंगे. वी कॉल्ड इट बैलेंस. तो मैं ये दिखाने वाला हूं आपको कि जो 100 यूनिट्स मैं एज्यूम कर रहा हूं इंसोलेशन विच इज रिसीव्ड बाय द प्लैनेट अर्थ, ओके, हाउ इट रिटर्न बैक, एंड दिस इज द क्वेश्चन इन द हीट बजट. सो लेट्स सी. अब क्या है कि अगर हीट बजट पढ़ोगे इन एनसीईआरटी, इट इज ऑल्सो मेंशन्ड फंडामेंटल ऑफ वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी. In Savinder Singh book, which generally offered to the student those who are preparing for the civil services examination, वो शविंदर सिंह की जियोग्राफी पढ़ते हैं, फिजिकल जियोग्राफी. उनकी जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी सेपरेट बुक्स भी आती हैं, इन्वायरमेंटल जियोग्राफी. ठीक है. उसके अलावा एक और बुक है जो मैं रेकमेंड करता हूँ जो सिविल सर्विसेज यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं, स्पेशली जियोग्राफी ऑप्शनल. वो बुक है मेड सिंपल ऑफ द रूपा पब्लिकेशन, विच इज़ वेरी गुड बुक. नॉर्मली आजकल जो अप्लाइड क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो रूपा से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इन सिविल सर्विसेज. 2 वॉल्यूम आती है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2. वन ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, अनदर इज इकोनॉमिक जियोग्राफी. बट द लैंग्वेज ऑफ दैट बुक इज़ क्वाइट यू कैन से सिंपल है, बट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लिखा हुआ है. बहुत बल्कि बुक नहीं है, बहुत हैंडी बुक है, बट काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मेंस में वहाँ से. मेरे जो डेटाज होंगे वो रूपा से मैच करते हैं.
सविंदर सिंह से वेरिएशन हो सकता है, तो उसके लिए बॉदर नहीं होना है, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्योंकि बच्चे बहुत सारे सोर्सेस पढ़ते हैं, तो डेटाज वेरिएशन होगा तो कहेंगे इस बुक में ये है, तो मैं बता भी दूंगा कि किस बुक में क्या है। बट फिलहाल जो डेटाज यहाँ आपको दिखेंगे वो रूपा मेड सिंपल से है, यानी दैट स्टैंडर्ड बुक विच इज़ फॉलोड बाय द मेजॉरिटी ऑफ सिविल एस्पायरेंट। ओके, तो वही मैंने कह दिया कि एक दो फिगर इधर उधर है तो आप उसके लिए बॉदर नहीं होना, ठीक है। और मैं बता भी दूंगा कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है और सविंदर सिंह में क्या है। सो लेट्स सी when what you have to assume that 100 unit of this solar radiations reshifts by the earth's surface, okay, moving towards the surface of the earth. This is the sun, this is the planet earth. Here there is a atmosphere, this is earth atmosphere. Beyond atmosphere there is a vacuum, we called it space, ये अंतरिक्ष है जहाँ न एयर होते हैं न डस्ट पार्टिकल होते, वो वैक्यूम होता है प्लेस। Sun radiant energy, as you know, the energy which moves towards the earth's surface in the form of waves, and light is a transverse wave, and light having properties that it can travel through the vacuum even, no need of a medium. So it can travel through the space, enter into the atmosphere. What is the composition of atmosphere? Atmosphere having the gaseous molecules, atmosphere having the dust particle as well as other particulate matter like pollen grains. Apart from that, the atmosphere having the water vapor, okay, aerosols. Now and then this is the earth. And when you look at the surface of the earth, 71% part of the earth is occupied by water, 29% part is the land part. So now when you look at this, this is the incoming radiation. तुमने मान लिया यहाँ की 100 यूनिट रेडिएशंस अर्थ की सरफेस पर आ रहे हैं, okay, you have assumed. Now what happened? Roughly out of this 100 unit, roughly 35 units of the radiation, incoming solar radiations, reflected back, absorb नहीं होते, reflect back होते हैं। रिफ्लेक्शंस के लिए सरफेस चाहिए होता है, सरफेस से ही रिफ्लेक्ट होगा ना लाइट। तो क्या सरफेसेस होंगी जहां से लाइट जो है, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं? वो सरफेसेस आपको पता होने चाहिए। कितना यूनिट लाइट, मैंने कहा कितना यूनिट इनकमिंग सोलर रेडिएशंस रिफ्लेक्ट बैक होता है? आउट ऑफ 100, 35 यूनिट्स, ओके। वो एब्जॉर्ब नहीं होता। जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा प्लैनेट अर्थ के द्वारा, वही री रेडिएट बैक होगा। ये एब्जॉर्प्शन नहीं है, ये आया और वापस चला गया, ओके, रिफ्लेक्ट बैक। So how this energy, how this incoming solar radiation, how these waves reflect back, how this light? Now let's see. 23 units by the cloud and the water. Where the cloud you observe? In atmosphere, of course. And how the cloud condensation takes place? Of course, due to the availability of the water vapor in the atmosphere. The water vapor condensed and formed the cloud. So out of this 100 unit, when the incoming solar radiation reached to the surface, out of this 23 units reflect back. सविंदर सिंह ने यहाँ 27 यूनिट लिखा है, तो अगर वो बुक पढ़ेंगे आपको तो 27 दिखाई देगा। What I am referring here,
the Rupa. So cloud, and through cloud and water vapor, cloud क्या करते हैं, reflect back कर देते हैं. So when the light is coming towards the Earth's surface, when it enter into the atmosphere, in atmosphere it strike with the cloud and cloud return back the rays. तो rays वापस चली जाती. Okay, कितना unit? 23 units. Then 6 units by the Earth's surface. 6 units of the light able to reach the Earth's surface, cross the atmosphere, reach to the Earth's surface, but won't absorb by the Earth's surface. Try to understand. The reason is why? Because Earth के ऊपर snow covered area है. जैसे पोलर रीजन, एंटार्क्टिका जाओ तो एंटार्क्टिका में पूरा का पूरा रीजन ही आइस कवर्ड है, स्नो कवर्ड है. In the Arctic belt, when you move, okay, what you find in the region of Alaska, Norway, Canada, Siberia, यहाँ पर क्या देखोगे? Ice covered region है, Iceland, Greenland, okay, in the northern polar region. When you move to the temperate region and the tropical region, there are loftiest mountains like Rockies, Andes, Himalayas, Alps. And these mountains are covered by the ice and snow due to the height, altitude. So through the snow and the ice, the light reflected back. Okay, how many units? 6 unit written in Rupa. अगर सविंदर पढ़ेंगे 2 unit लिखा है. 27 plus 2. Here what I have mentioned, 6 unit by the Earth's surface. Earth's surface, that is the ice covered area or snow. Land and water. Water also reflect, but very little amount. This is okay. So 6 unit return back from the Earth's surface. 6 unit यहाँ से return हो गया Earth surface से. अर्थ ने एब्जॉर्ब नहीं किया. क्यों? क्योंकि अर्थ के सरफेस पे माउंटेन्स हैं जो आइस कवर्ड है, पोलर रीजन है जो स्नो कवर्ड है. इस रीजन से भी राइट रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं होते. रिटर्न बैक हो गया, आया और चला गया वापस. तो 23 प्लस 6 29, 35 यूनिट रिफ्लेक्ट होगा. अभी 6 यूनिट बचा है. नाउ द 6 यूनिट ऑफ द इंसोलेशन reflected by the atmosphere through scattering. एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, एरोसोल्स होते हैं. यहां लाइट आने के बाद स्कैटर्ड हो जाता है. स्कैटरिंग से क्या हो जाते हैं? यहां से लाइट डिफ्यूज हो जाते हैं और वहीं से वापस चले जाते हैं स्पेस में. सो 23 प्लस 6 प्लस 6 35 हो गया. So 6 unit scattered from the atmosphere won't reach to the Earth's surface even. Why the scattering? और scattering के कारण आपको sky blue दिखाई देता है. Scattering, ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां dust particle and particulate matter है. लाइट को ब्रेक करते हैं, लाइट डिफ्यूज हो जाती है और स्कैटर्ड हो जाती है. 6 unit by the surface of the earth, because earth's surface having the snow covered region, and 23 units by the cloud. In certain book it is written at 27, 2 and 6, so don't worry about it. 35 unit reflected back. कितना यूनिट बचा? 65 यूनिट. अब वो 65 यूनिट को देखें क्या होगा उसका. व्हाट हैपेंड टू द रिमेनिंग 65 यूनिट? ठीक है, आउट ऑफ 100 35 तो वापस चला गया स्पेस में, एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ कहीं पर भी. अब देखो, आउट ऑफ 65 यूनिट्स 17 यूनिट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन, 17 यूनिट एटमॉस्फेयर में आते के साथ एटमॉस्फेयर की गैसेस उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं. हाउ मेनी यूनिट्स? 17 यूनिट. इन एटमॉस्फेयर देयर आर वेरियस गैसेस हैविंग प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब द
light like ozone, carbon dioxide, sulfur dioxide, water vapor, all these gases absorb certain amount of light. How many units has been absorbed by the atmosphere? 17 unit. तो 65 में 17 माइनस करो, कितना आएगा? 48. Now the 48 unit of the light or incoming solar radiation reach to the Earth's surface. 48 यूनिट ही लाइट अर्थ सरफेस पर पहुंच पाती है. ध्यान रखो. How many units reach to the Earth's surface? 48 units. Let's see now. So what I have said that first what I have, let's assume 100 units of lights started traveling towards the planet Earth. Out of this 100 units, 23 units of the incoming solar radiation reflected back by the cloud. मैंने बताया ये 23 out of this 100 unit, यहाँ से एरो मैंने ऐसे दिखाया. Out of that 100 unit, the 6 unit scattered by the atmosphere. This is atmosphere. 6 unit scattered by the atmosphere, and the 6 unit of the light, when you look at, reach to the planet Earth and again reflected by the snow covered region of the planet Earth. This is reflected through a scattering process in the atmosphere, and this is by the cloud. Total 35 यूनिट रिफ्लेक्ट बैक हो गया. फिर मैंने आपसे क्या कहा कि 65 यूनिट रिमेनिंग एनर्जी बची है. आउट ऑफ दिस 65 यूनिट्स, 17 यूनिट एनर्जी trapped by the atmosphere. How? Certain gases are there which trap this energy: carbon dioxide, ozone, methane, okay, SO2, CO, water vapor. These are known as greenhouse gases. These greenhouse gases trapped this 17 units of light इनकमिंग सोलर रेडिएशन. अब ये 17 यूनिट आया नहीं अर्थ सरफेस पर, ये ट्रैप्ड हो गया एटमॉस्फेयर में. अब रिमेनिंग 65 में से 17 माइनस कर देंगे जो इन अर्थ की तरफ आ रहा था, तो अब बचा 48 यूनिट्स. लेट्स सी द 48 यूनिट्स, व्हाट हैपेंड टू दैट. ओके, नाउ 48 यूनिट्स. Out of this 48 units, 14 units of the light directly went to the space. 14 यूनिट लाइट डायरेक्ट स्पेस में चली जाती है विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर कोई इंटरफेरेंस नहीं करता. टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वापस चला जाता है स्पेस में. कितना? 14 यूनिट. सो 48 में से 14 माइनस करो, कितना बचा? 34 unit of light. Okay, so 14 units out of 48 माइनस कर दिया तुमने, 34 बचा. अब इस 34 को देखो, ये 34 डायरेक्टली स्पेस में नहीं जाते. फर्स्ट दिस 34 यूनिट ऑफ लाइट एंटर्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. ये पहले एटमॉस्फेयर में आते हैं. 19 यूनिट इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन. latent heat of condensation. What is the latent heat of condensation? Yesterday I had discussed. अर्थ के सरफेस के ऊपर वाटर बॉडीज हैं. ओके,
अर्थ सरफेस के ऊपर वेजिटेशन है, देयर आर सो मेनी ग्रासलैंड, फॉरेस्टेड एरियाज, बायोम। अर्थ सरफेस के ऊपर मॉइस्ट रीजन है, मॉइस्ट एरियाज लाइक स्वैम्पी एरिया, मार्शी एरिया, दलदली क्षेत्र, ऐसे मॉइस्ट एरियाज भी हैं। ओके, एंड एज यू नो देयर इज अ रॉक एंड सॉइल्स, rocks and soils, and in the pore of the rock and soils the water is also present, as you know. When the incoming solar radiation absorbed by these surfaces, लीफ ने, अगर प्लांट की लीफ ने एब्जॉर्व किया इनकमिंग सोलर रेडिएशन को, तो लीफ वार्म होगा, और लीफ वार्म होगा तो लीफ में जो अवेलेबल वाटर है वो भी वार्म होगा, और वो वाटर वेपर बनकर स्किप करेगा टू द स्टोमेटा. द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन. व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस? ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन. नो, so from the leaf what happened? The water released in the form of water vapor, gaseous form. And why the water converted into water vapor? When water absorbed the heat, it converted into the water vapor. Like that, when the ocean, rivers, pond, lakes, this surface also receives what? The heat, or trap the light, again the water absorb the heat, converted into the water vapor. Like that, when the light reaches to the rock surface and the soil surface, the water which is available in the pore of these rocks and soils again converted into the water vapor. So this water vapor having the heat, this heat is known as latent heat. So when this water vapor reaches into the atmosphere, this water vapor is warm. It is not cool. And the water is in the gaseous form. The gas is lighter, ascending in the atmosphere, reach to the atmosphere. When this water vapor reach to the atmosphere, तो मैंने बताया था लैप्स रेट. जब अर्थ के सरफेस से तुम ऊपर जाते हो, हर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिड्यूस होता है. इट इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट. तो एल्टीट्यूड के साथ कूलिंग होती है, एटमॉस्फेयर कूल होता है इन ट्रोपोस्फेयर टिल ट्रोपोपॉज. ओके, मीन्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस टिल 16 किलोमीटर इन द इक्वेटोरियल रीजन and 8 kilometer in the polar region. What you find? After every 1 kilometer, 6.5 degrees Celsius temperature reduce. So when the surrounding is cool and the water vapor is rising and water vapor is warm, the water vapor started releasing the energy into their surrounding. This heat is known as latent heat. And that's why when the cloud condensation takes place in the summer season, we feel more heat and humidity. Why? Because cloud release the energy. That energy is known as latent heat. So here the radiation is moving in the atmosphere in the form of heat. That heat is known as latent heat of condensation. क्यों? क्योंकि जब क्लाउड कंडेंसेशन होता है तो ये लैटेंट हीट फिर वापस रिलीज होते हैं. जो वाटर मॉलिक्यूल ने ट्रैप कर रखा है उस हीट को वो रिलीज करता है. क्यों? क्योंकि उसका सराउंडिंग कूल है और हीट का ट्रांसफर वार्म से कूल बॉडी की तरफ होता है. सो व्हेन द वाटर वेपर रीच इनटू द एटमॉस्फेयर, दिस वाटर वेपर स्टार्टेड कंडेंसिंग फॉर्म द क्लाउड and again converted into the water droplet. ये फेज चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि हीट जो ट्रैप किया था वो हीट रिलीज करते हैं ये सराउंडिंग्स में. दिस इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन. सो 19 यूनिट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ latent heat. Now when you look at 9 units,
9 units of energy is moving into the atmosphere from the Earth's surface in the form of convection. कन्वेक्शन, कन्वेक्शन को हिंदी में कहते हैं संवहन। क्या होता है? When the Earth's surface receives the incoming solar radiation, the Earth's surface get heated. ये तो quite common है, surface heat होगा। And when you look at the air which is in contact with that surface also get heated. Atmosphere contact में है अर्थ के। Atmosphere is mainly made up of gaseous molecules. So this gaseous molecule also entrapped the energy and gases started what? This packets of air started hitting. जब ये mass of air heat होते हैं तो expand होंगे तो मॉलिक्यूल के बीच स्पेस क्रिएट होगा। ऑब्वियसली मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस जब क्रिएट होगा तो पैकेट ऑफ एयर अपनी सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से लाइटर होंगे और बलून की तरह ये एयर पैकेट ऊपर राइज करता है। दिस वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज कन्वेक्शन। अब ये एयर का जो पैकेट राइज कर रहा है ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ, ये एयर पैकेट वार्म है। क्यों? क्योंकि ये कांटेक्ट में था अर्थ सरफेस के। इस एयर पैकेट में अगर तुम इंटर करोगे यू फील व्हाट? हीट। आप बलून में बैठकर और उड़ो तो तुम अगर उस एयर पैकेट में जाओगे व्हाट यू फील? यू फील हीटेड। टेम्परेचर इज कंपैरेटिवली हाई विद in comparison to the surrounding area of the atmosphere. This process is known as convection. This vertical movement of air, lighter air due to heating is known as convection. So how many energy, how many heat is transferred to the atmosphere in the form of convection? The 9 units. So 19 units by the latent heat, 9 units by the convection. And the 6 unit of the light radiation returned back in the form of long wave radiation. It is a terrestrial radiation. अर्थ से जब लाइट जाती है वापस तो ज्यादातर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। ठीक है, लॉन्ग वेव मीन्स जो बैंड ऑफ लाइट होगी रेड, इंफ्रारेड इस फॉर्म में जाएगी। और लॉन्ग वेव रेडिएशंस को ये ग्रीन हाउस गैसेस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं वो रोक लेते हैं। उसमें से कुछ एनर्जी को, कुछ तो वापस स्पेस में चली जाती है, जैसे 14 यूनिट चली गई थी, बट कुछ एनर्जी इंट्रैप्ट करते हैं। कौन करता है इंट्रैप्ट? ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2, ओजोन, वाटर वेपर, methane. So 6 units of the heat entrapped by the, this is the terrestrial radiation, long wave radiation entrapped by the atmospheric gases. So all the 34 units of the heat return back and stay in the atmosphere for certain period of time. कहाँ रुक गया ये आकर एनर्जी हीट एटमॉस्फेयर में? कितना यूनिट एनर्जी रुक गया आकर एटमॉस्फेयर में? 34 यूनिट्स। ये एनर्जी, ये हीट रिटर्न बैक हुआ है कहां से? अर्थ सरफेस से। ऑलरेडी 17 यूनिट पहले से ही एटमॉस्फेयर में था, जब हीट आ रही थी तभी रोक लिया था इसने। तो 17 यूनिट और 34 को ऐड करो, कितना होगा? 51। यही होगा ना? यस सर। तो मैंने लिखा इधर 51 यूनिट्स। 51 unit of the heat again radiate back to the space from atmosphere. Not by the earth surface suddenly. समझ में आ रही है बातें? पहले वो यहां आकर रुक गया है, फिर यहां से वापस स्पेस में जाएगा। ठीक है,
51 यूनिट जो एटमॉस्फेयर से स्पेस में गया और 14 यूनिट डायरेक्टली चला गया था अर्थ सरफेस से, तो 51 प्लस 14 कितना हुआ 65। यही 65 यूनिट तो मुझे बैलेंस करना था, 35 तो रिफ्लेक्ट बैक हो चुका था। ठीक है, सो दिस इज नोन एज हीट बजट और हीट बैलेंस। सो व्हाट इज द प्री क्वेश्चन, पूछेंगे ये कि अर्थ सरफेस से लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के थ्रू कितना एनर्जी एटमॉस्फेयर में जाता है फिर स्पेस में आता है, 19 यूनिट्स। वो अब ये देखो, ये जो रिफ्लेक्ट होते हैं सडन रिफ्लेक्शन, इसे कहते हैं एल्बेडो। इसके लिए वर्ड क्या आता है, एल्बेडो, एल्बेडो, और इट इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट और एल्बेडो। surface of earth nature is different, somewhere desertic areas, somewhere snow covered area, okay, somewhere the water bodies, somewhere lands। तो जो सरफेस स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं, वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट, जैसे स्नो कवर्ड एरिया, डेजर्टिक एरिया, ओके, न्यूअर शाइनिंग रॉक्स, इवन स्लाइट बीट फ्रॉम द वाटर बॉडीज। बट सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन जो होता है अर्थ सरफेस पर स्नो कवर्ड एरिया से होते हैं, क्लाउड से होते हैं, जो मैंने कहा इसे एल्बेडो इफेक्ट कहते हैं। मैं फर्दर आपको एक लिस्ट दूंगा, एक टेबल दूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा किस सरफेस से कितना % रिफ्लेक्शन होता है, बट आई विल लेटर डिस्कस इट इन डिटेल। गेटिंग माई पॉइंट? सो यू हैव टू कीप दिस टर्म एल्बेडो। एल्बेडो का मतलब क्या है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है सरफेस से, इसे रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट भी कहते हैं। ओके, इफ द सरफेस इज क्वाइट स्मूथ इट रिफ्लेक्ट बैक द लाइट, this phenomena is known as albedo। okay, so now when you look at इसे, हम जो मैंने अभी हीट बजट या हीट बैलेंस डिस्कस किया, इट इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल हीट बजट ऑफ द अर्थ। व्हाट इट इज नोन एज वर्टिकल, क्योंकि लाइट अर्थ सन से आ रही है और वापस चली जा रही है स्पेस में, सो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द लाइट्स, and light having the photons, the packet of energies, and that's why the earth get heated। but अर्थ की हीटिंग कॉन्टिन्यूसली क्यों नहीं हो रही है इंक्रीज, क्योंकि अर्थ वापस रेडिएट बैक कर रहा है, और इसीलिए कई सालों से अर्थ का टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओके, दिस इज नोन एज हीट बजट। बट इसमें एक अदर डिमेंशंस भी है, उसे हम कहते हैं लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। तो अब एक कॉन्सेप्ट्स ये भी पढ़ेंगे।